Now, what is the rationale of economic planning? We have been talking about development education, and we have talked about economic planning. We have talked about some of the economic plans this morning, and we'll continue with that. Now, why we make economic plans? In life, we make plans just because we want to know that where we want to reach, what is our destination, how important that destination is for us. So similarly, the economies should go according to set plan so that they progress well. The development is balanced one. The balance, both internal balance of the economy and the external balance of the economy should be good enough. So we plan our economy exactly as per the requirement of the country or the nation. We plan to increase per capita and national income. Obviously, every country want to be rich and richer as the time goes on. So main reason is that we want to have a good rate of economic growth, and a good rate of economic growth reflects in form of the per capita income, which is increasing in a term of the GNP, rate of growth of GNP. As we can mention that last year we were Pakistan was progressing. This is what the economic surveys say, at the rate of 6% per annum. And unfortunately, the very last year, which has just passed by, the figures are not all that pleasant. That is almost around 1% rate of growth. The economic planning is for the simple purpose that sustained economic growth should continue. Higher level of employment. As the economy would develop, so would the opportunities of employment would be created. More and more persons will be employed. More person will be employed. More income will be generated. More saving would result, and individual saving summed up would be collective saving of the country. They would be pumped back, invested, and hence this economy would keep on growing. So we have to plan in a way that the savings are given incentives, the investment is encouraged, and hence the size of the cake grows on and on. Once the size of the cake grows on and on, the share to each consumer would obviously increase. Price stability. Price stability is another reason for planning. If the economy is not well planned, obviously prices are determined by the balance of the supply and demand forces. If we will not plan at national level how much land would be allocated to which crop, then ultimately at the end of the year, that crop is going to scare, and that scarcity would result in low supplies. Low supplies, demand is the remaining the same, prices would shoot up. So that is why the planning is done at national level to see that the prices are stable. If the planning is improper, planning is not done, then the prices would shoot
and inflation would be runaway inflation, causing a great havoc to the economy at macro level and to the consumers at micro level. Then we have economic planning because we want to reduce the inequalities in income distribution. Per capita income is just an average. Average of what? GNP divided by population. However, we know that in a country there are people who are very rich, very wealthy. There are people who are very poor. If we want to bridge the gap between rich and the poor, we need to plan. And planning would be appropriate planning would be taxing those who have taxable incomes and subsidizing those who are living below the poverty line. Similarly, we want to have economic planning to remove BOP difficulties. Balance of payments. Balance of payment is the balance between what we export and what we import. If the proper planning is not done, then this balance would not be there, and if we'll allow unlimited imports and we have limited capacity to export, the gap between export and import would increase, and hence there would be balance of payment problem, leading to if the in the long run we let it go like that, then we will face the foreign exchange reserves problems as nowadays we are facing, that our exports are too much, our imports are too much, and our exports are not matching them. We do not have enough dollars to pay the import bills, and we cannot open LCs, and hence the issue is there. So a nice, good meticulous planning at high level where we have got import substitution and export promotion measures taken, these measures in place, that would lead to good economic planning and a healthy economy of the country. Then why we have economic planning? We have economic planning to reduce regional disparities. Different regions of the country, if they are left alone on their own, on the principles of laissez-faire, then the result would be there would in some areas there would be a rapid rate of development. In other areas, they would lag behind. As in case of our countries, some areas are very well established. Other areas like Balochistan and the belt of KPK, tribal belt of KPK, where the industrialization is not taking at that pace as is taking place elsewhere. Similarly, the industries are being located around the urban cities, whereas the rural areas, far-flung areas, are not getting due investment. So, nice, good planning would be that the development, the fruits of development are shared by all. Okay. So, and how can we go about doing it? Declaring some areas as tax-free zones, giving concession in some areas that okay, if you install in the industry in that particular area, so for another 7 years, another 10 years, another 5 years, any one installing industry investing in those areas would have free tax. No taxation would be done to that particular area.
So that sort of economic planning would reduce regional disparities. Now, more points regarding the rationalization and right, self-sufficiency in food. If we plan well, if we plan well, then we can have no food shortages. We'll have self-sufficiency in food. For instance, uh, we have to balance between the wheat and cotton growing. So if we let people grow cotton because that's more profitable, and less areas are available for cultivation of wheat, what would happen? Then we'll run short of food items. That is important food item is wheat. So the government plans in a way that they declare certain areas as cotton grown areas, other areas at wheat growing areas, other areas are made available for sugar cane so that there's no shortage of sugar canes, hence not affecting the sugar industry. So economic planning is important, and economic planning would help in self-sufficiency of food. Then we have got redressing imbalances in the economy. In economy, the growth which is taking place in different sectors of the economy may not be balanced. So we want to plan so that there's a planned growth of the economy. Then increase in saving. Savings are very important. In any, they have got important role in the, excuse me, they have got, saving has got important role in the economic development of any country. Because as I mentioned before, when there would be savings, that would lead to investment. Investment leading to more in capital formation, and hence more employment, more income, and when more income, more saving, and this circle goes on, leading to progress of a country. So this is very important that we should have planning, and in planning we should give due importance to the factor of saving. Then we have got reducing poverty levels. Sorry, before that, point 10, that is reducing population growth. Now, population growth beyond a certain limit may have a may be burdensome for the economy. There are economies, they have got a capacity to absorb a certain rate of growth of population. Beyond that growth, it may affect the economy. So it is important that we take due notice of at what rate the economy is growing, because then accordingly the government has to plan for the population which is coming up, which is being added to the economy. For them, the nation has to cater for the schooling of the children who are coming up, the health of the additional population, the hospitals requirement, the water, energy, transportation, and all other requirements are to be met. So we need to provide that due services or due commodities for the population.
Hence, we should plan that what rate of population growth would be suitable for us, would be good enough for us. Similarly, the planners have also see to it that the poverty levels are taken care of. In the last several years, we saw that the people living below the poverty line, they are getting less and less due to good economic planning. But then this growth could not keep the momentum, and we have been suffering. Maybe there are a host of factors which are involved, which affect economic growth, which affect development. Uh, Planning can cover to some extent, can control a few factors as well if it is done properly. Then provision of social services. Obviously, I've mentioned it during the discussion that the planners plan to take care of the provision of social services, and then they have to ensure that the development is sustained over a period of time. It keeps the momentum, and it goes on and on and on. So long-term economic growth is the ultimate goal of the planners, that the growth should keep on increasing, and that growth rate of growth should be sustainable. That's not one time, two time, and then there's a dip. कुछ ज़रूरी सवाल वाइटल क्वेश्चंस क्या हैं, मसलन कैन ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन बी अचीव्ड साइमल्टेनियसली? क्या ये हो सकता है आप ग्रो भी कर रहे हो और साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी मेंटेन कर रहे हो? क्योंकि कुछ आपके मेजर जो होती हैं कन्फ्लिक्टिंग होते हैं। जैसे इंसान की सेहत भी है कि आप अगर ये आपने ये बीमारी है, इसके लिए ये एंटीबायोटिक लेनी है, लेकिन इस एंटीबायोटिक के जो है ना कुछ अफेक्ट ये होगा कि साथ थोड़ा सा शायद पेट भी लूज हो जाए। इसी तरीके से जैसे कैंसर की के कुछ दवाइयाँ हैं, कीमोथेरेपी वगैरह है, ये दवाइयाँ तो लेते हैं, उससे जो सेल्स हैं कुछ जो डेंजरस है वो तो मरते हैं, लेकिन साथ साथ के बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से इकोनॉमी जो है वो भी एक बॉडी की तरह है। उसमें भी कुछ इश्यूज होते हैं। उन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए जब आप कुछ मेजर्स लेते हैं, तो जब एक मेजर ले रहे होते हैं तो उससे एक चीज तो संभल रही होती है, दूसरी उससे जो है ना कुछ अफेक्ट कर रही होती है। सो आपने उसमें बैलेंस करना होता है, बैलेंस लेना होता है। जैसे आप अगर जो है ना चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करें, अपना पैसा लगाएं, अपना सरमाया लगाएं, तो फिर आपको उनको टैक्स छूट देनी होगी। लेकिन अगर साथ साथ आपका मकसद ये भी है कि आप गरीबों की भलाई करें और इक्वल लेवल ऑफ आप वो उनको डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन दें, तो फिर आपको टैक्सेशन भी करनी पड़ेगी। सो अपनी आपने इतना दरमियाना रवि करनी है कि आप टैक्सेस इतने ज़्यादा ना लगाएं कि इन्वेस्टमेंट से लोग भाग जाएं, और फिर इतना भी फ्री उनको ना छेड़े कि जो पार्टी लाइन पे जो रह रहे हैं, वो कहें जी बेशक कितना भी रेट ऑफ ग्रोथ हो रहा है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम वहीं के वहीं गुर्बत की लाइन के नीचे हैं, खड़े हुए हैं। सो इज ग्रोथ नेसेसरी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कि जब आप ग्रो करेंगे तो आपका केक का साइज बड़ा होगा। केक का साइज बड़ा होगा तो ज़ाहिर है जो जो हिस्सेदार हैं उनमें ज़्यादा हिस्सा आएगा उनको। फिर इज इट इकोनॉमिक ग्रोथ दैट लीड्स टू रिडक्शन इन पॉवर्टी और द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? तो क्या ये इकोनॉमिक ग्रोथ है जो पॉवर्टी को कम करती है, या प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है? भाई दोनों हैं।
जब तक कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, केक का साइज़ नहीं बढ़ेगा, जब तक केक का साइज़ नहीं बढ़ेगा, हम जो है उसको फिर डिस्ट्रीब्यूशन के वक़्त हम उसको बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएँगे। और इसी तरीके से जो ट्रेड लिबरलाइज़ेशन है, जब आप ट्रेड को लिबरलाइज़ करेंगे, खुली तिजारत का आप बगैर कदम लगाए, बगैर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए, उसकी आप अलाउ करेंगे, तो उससे ज़ाहिर है वो ग्रोथ ज़्यादा होगी। जो ट्रेडर्स हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, उनको रग़बत होगी। सो पॉलिसी जो वाले अभी जो रैशनल के बाद ये इम्पोर्टेंट सेगमेंट आया कि जो पॉलिसी डिसीजन करते हैं या प्लानिंग करते हैं, वो क्या प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है। तो प्रोसेस ये है जी, प्लानर्स जो है वो पहले डेटा कलेक्ट करते हैं इकोनॉमी के हवाले से। इकोनॉमी के जो है ना वो रेट ऑफ ग्रोथ पहले क्या चला आ रहा है, मुख्तलिफ सेक्टर्स में क्या रेट ऑफ ग्रोथ है, एग्रीकल्चर में क्या है, इंडस्ट्री में क्या है, कॉमर्स में क्या है, कम्युनिकेशन में क्या है, एनर्जी सेक्टर में क्या है, मुख्तलिफ सेक्टर्स में रेट ऑफ ग्रोथ क्या चल रहा है। उसमें जो है ना फिर जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसका क्या लेवल है, कितना जो है ना हम पंप कर रहे हैं पैसा, और फिर उसके किस किस लेवल के ऊपर कितना कितना हम पैसा लगा रहे हैं। और फिर उसको आगे बढ़ेंगे जो हम, तो हम कहेंगे कि उसको कौन सा सेक्टर है जो अभी हमारा ढीला जा रहा है, जिसको हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, जहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, फिर उसको हम सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। और फिर प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग, और फिर ये जो इस पब्लिक पॉलिसी या प्लानर्स होते हैं, उन्होंने प्रायोरिटी लिस्ट बनाई होती है कि जो है किस सेक्टर में हमने पहले इसकी प्रायोरिटी है, फिर जो इमरजेंसी नेचर का है, फिर इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी है। और किस हद तक किसकी जो है वो किसको ऊपर हमने कितने रिसोर्सेज जो है ना खर्च करने हैं। और इसमें जाहिर है हमारे कुछ मजबूरियां भी होती हैं, जैसे आपकी डेट सर्विसिंग है, जो लोन्स आपने पहले से लेके रखे हुए हैं बड़े अरसे से, उन लोन्स को आप लौटाना भी है। अनलेस वो जो जिन्होंने कर्जा दिया है वो मेहरबानी करके आपको वो कुछ गुंजाइश दे दें या कुछ अरसे के लिए छूट दे दें, आपको लाजमी अपनी बजट में से प्लान करके वो उनको वापस लौटाना है। सो आपकी वो मजबूरी है। कुछ डिफेंस के ऊपर खर्चा है, वो आपकी मजबूरी है। कुछ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा है, वो आपकी मजबूरी है। जो इस तरह के जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हैं, उनकी वो आपकी कुछ तो कुछ हद तक आप कम कर सकते हैं, ज़्यादा हद तक आप कम नहीं कर सकते। फिर उसके पास जो बाकी पैसा बच जाता है, वो आपके लिए डेवलपमेंट के लिए वो बच पाता है। और वो जो डेवलपमेंट के लिए बच जाता है, उसमें भी आपने प्रायोरिटी बनाई हुई है कि एनर्जी सेक्टर हमने कोई डैम बनाने हैं, हमने कोई मोटरवेज बनानी है, हमने कोई जो है वो इरिगेशन सिस्टम को ठीक करना है, हमने कुछ सड़कों का निज़ाम बेहतर करना है, और स्कूल बनाने हैं, कॉलेजेस बनाने हैं। फिर आप प्रायोरिटीज़ अपनी सेट करके उसके मुताबिक वो आप एलोकेट करते चले जाते हैं। और फिर जो है ना जो पॉलिसी प्लानर्स हैं, ये उस सिर्फ एलोकेट नहीं करते, फिर मॉनिटर भी करते हैं, देखते भी हैं कि वो जो रेलेवेंट सेक्टर्स हैं, उन पे ऊपर वो खर्च भी हो रहा है पैसा।